अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे की मदद के बगैर अपने स्ट्रेटेजिक मकासद किस हद तक हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे वेटरन सफारतकार एम्बेसडर रॉबिन रेफेल से, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सफारतकारी का तवील तजर्बा रखती है और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में भी इस वक्त अहम किरदार अदा कर रही है। एम्बेसडर रेफेल, वेलकम टू व्यू 360. As a diplomat who's still busy in track 2 diplomacy with Pakistan, what is your assessment of President Trump's Afghan policy and how he has brought Pakistan into the fold? Well, thank you very much for inviting me here today. It's a pleasure to be with you. I think the very good news about President Trump's recent speech is that we now have a clear Afghan policy after many months of uncertainty and contentious debate here. And the further good news is that the other options on the table, which were a total withdrawal or turning our efforts over to a mercenary force, are no longer on the table. So that's very important. What's different about this policy is that we are no longer having timelines in an effort to persuade the Taliban that we're here to stay. The previous policy had been to have a timeline in order to convince the government of Afghanistan that they needed to accelerate their reforms and curb corruption. To convince them we wouldn't be there forever. So it's kind of the flip side. Right. But what about how he has addressed Pakistan in his policy? Well, I think it's not surprising nor new that he expressed concern about Pakistan's support for the Afghan Taliban. What was new and I think very concerning to Pakistan was his explicit call for more engagement by India. Right. So I'll briefly let our viewers know what we have covered so far, and then I want to come back to an important aspect of this. Ambassador रेफेल का कहना है कि सदर ट्रंप की जो नई अफगान पॉलिसी है उसकी अच्छी बात है कि एक तो उसमें क्लैरिटी है, फिर ऐसी ऑप्शंस के ये जंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले कर दी जाए या फॉरेन ट्रूप्स को बाहर निकाल लिया जाए, वो ऑप्शंस भी अब टेबल पे नहीं हैं। तो इससे अमेरिका की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का एक मरतबा फिर अयादा किया गया है और इसके अलावा इससे अफगान जो अवाम हैं उनको भी इस बात का एक मरतबा फिर यकीन हुआ है कि चूँकि डेडलाइंस नहीं हैं इस नई स्ट्रैटेजी में, लिहाजा अमेरिका की वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का जो वादा है वो फिर पूरा होता नज़र आ रहा है। But what about the bluntness in his speech towards Pakistan as a diplomat? What do you think of it? Well, I'm not surprised at Pakistan's reaction. They were very unhappy, and of course the parliament came together, all parties issued a very strong statement. Pakistan's reached out to its other friends, China, Russia, and so on. And I think that it really has opened the door for a more intense dialogue between Pakistan and the U.S. And I think, if I understand correctly, the Trump administration has already reached out to Pakistan quietly to say that we really do want to remain engaged. सो पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है सदर ट्रंप की पॉलिसी के बाद जो सामने आया वो एम्बेसडर रेफेल की नज़र में सरप्राइजिंग नहीं है, उसमें हैरत की कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया खामोशी से पाकिस्तान के साथ इस मौजू पे बात करने की कोशिश भी कर रही है। नाउ यू हैव सेड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू क्वाइटली रीच आउट टू पाकिस्तान. ऑन द अदर हैंड वी हैव सीन दैट देयर कंडीशंस नाउ बीइंग अटैच्ड टू एड टू पाकिस्तान. When Pakistan now has a lot of investment coming through China, and as you also mentioned, it is reaching out to its allies, how much arm twisting is possible by the U.S. to get Pakistan to change its policies the way Washington sees helpful in achieving strategic goals? I myself don't believe in the arm twisting approach. I think what's really important now is that Pakistan needs to reassess very seriously its approach to the Afghan Taliban. But that we, on the other hand, need to seriously consider what we can do to help Pakistan address its legitimate security concerns in the region. सो एम्बेसडर रेफेल कहती हैं कि आर्म ट्विस्टिंग यानी पाकिस्तान पर दबाव डालने की पॉलिसी से वो मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को ख़ासतौर पर अफगान तालिबान की जानिब उस पॉलिसी को रीअसेस करे, उस पर नज़रसानी करे, और दूसरी जानिब अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है कि वो ये देखे कि वो पाकिस्तान के जो जायज़ ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ित्ते में सिक्योरिटी को लेकर, उनको समझे और उन पर पाकिस्तान की मदद भी करे. ऑन द फ्लिप साइड पाकिस्तान इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग ब्लॉकिंग NATO supply routes for Afghanistan, and even though US has alternative routes, if Pakistan blocks them, it will make the war expensive, more expensive for the United States. Beyond that, beyond costing US more,
could something like that also bring United States back to the diplomatic front even more strongly? Of course, we've been through this before. The supply lines have been blocked before, and frankly, it didn't do any good to Pakistan, and it didn't do any good for the United States. So I really hope that we can engage in a dialogue that will prevent that kind of action on the part of Pakistan, because it's just not constructive. So supply lines को बंद करना भी constructive नहीं है, बहुत मस्बत इससे कोई पेशरफ्त नहीं होगी. कोशिश यही करनी चाहिए कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं. So as a diplomat, what do you think should happen next? What are some concrete steps that both sides should take that gives both of them this feeling that each side understands strategic concerns and goals and can work together? Because so far in 16 years, we've seen too many ups and downs at this point. Yes, we have seen a lot of ups and downs, but I'm optimistic, and I always believe that there's an opportunity for another up. I think, in a way, it's good that Pakistan has paused its high-level engagement with the United States, because it gives Pakistan and the United States a chance to seriously consider where we want to go next. And I have every confidence that once we've both carefully reviewed where we want to get next, that both sides will be open to high-level dialogue, both on the political side and the military side, and that we can move forward. So एम्बेसडर रेफेल का कहना है कि एक तरह से पाकिस्तान ने ये अच्छा किया कि फ़िलहाल हाई लेवल टॉक्स अमेरिका के साथ उनको कुछ देर के लिए मुअत्तल किया है, उनको मौखर किया है. उससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान आराम से अपनी स्ट्रैटेजी पे एक दफ़ा फिर गौर कर सकता है. दोनों साइड पे जो क़यादत है, डिप्लोमेट्स हैं और मिलिट्री ऑफिशल्स, वो एक दफ़ा फिर अपनी स्ट्रैटेजी को और अपने गोल्स को रीअसेस कर सकते हैं और फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और एक दूसरे के साथ देखेंगे क्या अचीव हो सकता है और क्या नहीं. एम्बेसडर रेफेल, really appreciate your time and your insight. Thank you very much.